औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टाठियो बच्चों अस परो 6th साइंस तो सोन टॉपिक वाज गेटिंग टू नो प्लांट्स अत मज पढ़ो अस रूट स्टेम तो बे लीव्स रूटच फंक्शन कि तिम करान वाटर तो बे मिनरल्स एब्जॉर्ब सॉइल मज बे तुम सॉइलन रटान तिम रटान तिम रूट मजबूत तमन थवान सॉइल रटान बंद तो तम पे स्टेम रूट सॉइल तो मिनरल्स तो वाटर जाजब कोर हम तम खालान स्टेम कुल बाकियन हिस्सन मज तो तम पे पढ़ा लीव्स बनावा फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तथ प्रोसेस वन फोटोसिंथेसिस तो पत् सह वसान बाकियन कुल बाकियन हिस्सन मज स्टेम अत मज जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स वाटर खालान ब्या गजा वालान कुल बाकी हिस्सन मज अम पे गो फ्लावर. You are shown three branches of a rose in Fig 7.19 A, B and C. Which one will help you best to recognize the plant? Which color did you use for the flower in Fig 7.19? Are all flowers colorful? Have you ever seen flowers on the plants of grass, wheat, maize, mango or guava? If you see any flower in these plants, are they brightly colored? Let us study a few flowers closely. दपान तह हसा दिखुत फिग 7.19 अत मज A, B तो C ब्रांचेस रोज ब्रांचेस यानी गुलाब पोश ब्रांचेस लंच तो दपान तह कुछ यह करान यमो त्रेयो मज कुछ असल पे रिकॉग्नाइज गसान यह सह प्लांट तो कुछ कलर तुम फिग 7.19 मज वुचान फ्लावरन यम रेड कलर तो यम सारी फ्लावर्स कलरफुल तुम जहाँ वुचमुत फ्लावर यमन हंद मकाई कुलिक फ्लावर छुआ वुचमुत कनक कुलिक छुआ वुचमुत मैंगो ट्री छुआ वुचमुत गावा फ्रूट यम छुआ फ्लावर तुम वुचमुत तो दपा हसा परो यमो मज कुछ अगर वुचमुत कुछ कलर्ड तो बे हसा परो यम क्लोजली युस यह यह लीफ अमी रोज प्लांट लीफ मगर यह यमो ब्रांचो वांचो रोस्तुई बी ब्रांचेस तो बे लीव्स तो सी पार्ट अत ए ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर्स अत लीव्स तो फ्लावर्स वो करो एक्टिविटी वी वुड रिक्वायर वन बड एंड टू फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग दतुरा China rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar. Also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water. दपा अनो करो एक्टिविटी अनो बड बड गई ये मज बड गई कि यह गई बड तो दपा अनो यह बड अनो बे अनो फ्रेश फ्लावर्स फ्रेश फ्लावर्स ईच ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग दतरिक या चाइना रोज या मस्टर्ड या अनो ब्रिंजल यमिक वांगन कुल या अनो लेडी फिंगर या गुलमोहरुक बे अनो ब्लेड बे अनो गिलास स्लाइड बे अनो पेपर बे अनो मैग्निफाइंग ग्लास. Observe Fig 7.20 कि ये वुचु 7.20 carefully look at the prominent parts of the open flower. These are the petals of the flower. Different flowers have petals of different colors. दपा युस यह नोन part prominent को नोन part युस यह मसा चे petals एम flower petals. बड़ छु कि ये युस यत नेबर कन छ कि ये कि यम यपर कन यम सेपल्स आसान यम ग्रीन ग्रीन यम गई सेपल्स जुस यत मज पत यह पोश ये नेरान यम गई पेटल्स यम वथर यम नेरान यम गई पेटल्स. Where do you think the petals are in closed bud? Which is the most prominent part in a bud? Did you see that this part is made of small leaf-like structure? They are called sepals. Take a flower and observe its petals and sepals. Now answer the following questions. दपा युस हसा यत बड़स मज कि यत बड़स मज नोन पार्ट हम अंदर कुन यह बड़ बंद तो दपा युस हसा यत नोन पार्ट ग्रीन यह लीफी पार्ट यम वथर ही यमन वन सेपल्स. दपा वुचु सा यह तो पत वन यमन क्वेश्चन आंसर. हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव यत कत सेपल आर दे जॉइंट टुगेदर यम रलायत. व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड द सेपल्स इहिंद कलर वन पेटलन तो सेपलन हंद. हाउ मेनी पेटल्स डज योर फ्लावर हैव तुहंदिस फ्लावर्स कत वथर पेटल्स आर दे जॉइंट टू वन अनदर आर दे आर सेपरेट यम इकवट रलायत कि अलग अलग. Path go do the flowers with joined sepals have petals that are separate or they joined together. दपा यमन flower joined sepals छि यमन पोशन रलायत sepals तमन
petals alag alag ke tum ti joined ikvat ch. Make a table based on the observation of the whole class. Table 7.3 add observations to this table from a field trip to a locality where there are plants with flowers. Fill the last two columns after you have gone through the entire section. तो ये activity करनी तो छु गसन field मज पच्ची table बरन as name of the flower go rose ach number and color of petals ach variya many color different color number and color of sepals ach 5 color ch color goes green Pat goes are the sepals joined together or separate chis I can relate chis or statement is free or joined to petals stamen is free to or joined to petals stamen cha alag alag in joined petals present absent cha present cha can absent cha. To see the inner part of the flower clearly you have to cut it open if it is sepals are joined. For example in datura and other bell shaped flowers the petals have to be cut lengthwise and spread out so that the inner parts can be seen clearly. Daba yele hasu to ye flower chu clearly wuchun ta hasu chu cut karun emix agar emix sepals joined is for example datur kulis maz ki yas go datur kul daba emi ye hasu chu bell shape ya anu baaqi bell shape flower anu emix sepals chu tu lengthwise the pat kariu yem spread so that inner parts can be clearly seen asya ko yem inner part clearly wuchat. Remove the sepals and petals to see the rest of the parts. Study the fig 7.22 carefully. Compare your flower with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower. Daba yem kariu sa yem inner parts emich andrem history yem petals the sepals kariu em maz the pat wuchu carefully kariu compare flower with illustration and identify kariu emik stamens the be pistil em flower ok each flower yach sepals yach chor his asan flowers ch asan chor his godnyathi go sepals ye green leafy structure yus chus asan inga sepals em pat yem ch asan emik wathar ch asan gay petals em pat yem zeet asan yem zeet at mans chu asan tom leder gay stamens to yem at pet chu asan gay carpels. Daba ikariu sta kum ikariu alag alag sepals kariu alag petals kariu alag ichu datur kul nasan ichu bell shaped flower emiuk wis em ch karme sepals at alag petal te karin alag at draw pistil go ki ye part chu asan at chu wana is pistil ichu asan yed nasan yat flowers yed nasan öth pet chu asan yem stamens yeman is wana tum zeet ch asan yem lidir zoy tar hish the iman taran ch wana is stamens the iman pet at ch asan zihis akh ch go at yut his go filament be ch asan at pet tum like yem lobes hi banayt iman ch wana anthers iman loban man ch asan pollen grains yem reproduction khatra lagan ch. Look at fig 7.23 carefully. It shows the different kinds of stamens present in different flowers. Can you recognize both the parts of the stamens in your flower? Daba to hikwa flower kim donway part hikwa to recognize stamen donway part hikwa to yat flowers ma recognize karit. How many stamens are there in your flower? Daba at you see that flower to unu atmaz wuchu ya kahti flower to unu atmaz wuchu stamens katya ch. Draw one stamen and label it as parts. Akh banoyu to emik parts kariu label. The innermost part of the flower is called the pistil. Daba yus asa andrem part achu asa achu wana pistil yus to me hoke ho ma yachu andrem part asa at flowers achu wana pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Daba agar tu ye asal pat hekyu wuchit ki to yem stamens chunu remove karit. Identify the parts of the pistil with the help of fig 7.24. Daba pat kariu sa yem pistilic parts to identify. Draw a neat label diagram of the pistil of your flower. Pat karo is activity. Let us now study the structure of the ovary of a flower. Wo paro is structure flower jo ovary hund. It is the lowermost and swollen part of the pistil. Daba yasich asa yem pistilok yus ye hisso asa inner part of flower. Daba em pistilok his you swollen yus ye amut asa ye swollen ki ye hunyamut yo part. Ach wana is ye ovary.
We will cut this part of this part to study how it looks inside. दबा यह से करो इस cut इस वुचो यह किछ अंदर पासान. Take two ovaries from different flowers. Cut them into different ways as shown in Fig 7.25. दबा ज ovary अनु से दोन फ्लावरन हज अब करियो तो कट इतकन अस होमुत 7.25 मज अख इम करमुत इतकन ट्रांसफर अमुत इम लॉन्गिट्यूडनल ब्या ट्रांसफर इम खड़ा कर ब्या दोल चटमुत. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the two pieces of the ovary you have cut. Observe the inner part of the ovary using a lens. Do you see some small bead-like structure inside the ovary? They are called ovules. Draw a label diagram in inner part of the ovary in your notebook. दपा यम सा तुह चटू तुह वो वो अत अंदरमिस हिस्सस मज अत लकट लकट बीडस ये फल ही तमन वन कि ये वो 7.26 यमन फलन हियन वन ओव्यूल्स इथे कन कि यम चोटम ये इथन सद कोर्मुत हिस्स ये कोर्मुत दोल कि यम लकट लकट पार्ट गई ओव्यूल्स. But do all flowers have sepals, petals, stamens, and pistils? Are there flowers that do not have any of these? Or there flowers which have parts other than these? दबा सारे पोशन सारे फ्लावरन सेपल पेटल स्टेमेन्स तो पिस्टल या अडने या यमन कहीं आसानी. Did you find any flowers which have sepals and petals that look similar? दवन तुह वुचमुत तम फ्लावर यमन जन पेटल्स सेपल्स ही बासान. Did you find any flowers in which the number of sepals is different from the number of petals? दबन तुह वुचमुत तुह कह फ्लावर तुथ या सेपल्स तो पेटल्स तिमन हुन नंबर different from the number of petals. Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? The structure is in flower so हमेशा same कहीं. The number of sepals, petals, stamens, and pistil may be different in different flowers. दपा इम फ्लावर किम चोर हिस्स sepals, petals, stamens, the pistil different in different flowers. Sometimes some of these parts may even be absent. Kun साथ parts absent. We have studied some features and functions of leaves, stems, and roots. We study the structure of different flowers. दपा अस functions of stems, roots, leaves. तो बेहसा structure of flower. We will learn about the functions of flower in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. दबा यम फ्लावरन हंस फंक्शन यम हसा परो अस हायर क्लासन मज तो बे हसा छ परो अस हायर क्लासन मज फ्रूटन मुतलिक ते यम फ्लावर्स पेटल्स कलर्ड क्या अट्रैक्टिव पार्ट यम इंसेक्ट्स बेहवान अत पे अत पेटलन मज जूस नेक्टर तथ वन यह चूसान अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees, and climbers based on their height, stems, and branches. The plants has such a group is banana. Plant on group is banana. Three group on much un banana is herbs, shrubs, the trees, be climbers. तो हसा यह हाइट पे बनावान कुस क्या कस कच हाइट तमे हिसाब ग्रुप्स बनावान बे स्टेम्स कि ब्रांचेस कि. What you have learned तुह क्या पोरू. The stems bear leaves, flowers, and fruits. दबा स्टेमन पे हेकान leaves दी flowers तो fruits ते. A leaf usually has a petiole and a lamina. Leafs ज हिस्से पतमे तथ लटिस वना petiole तो broad हिस्सस वना lamina. The pattern of veins on the leaf is called venation. It can be reticulate or parallel. दबा युस हसा यह pattern युस यह लीफन पे पनवथरन पे तो वेन्स लक्चे लक्चे रखी तिहंदिस पैटर्नस वन वेनिएशन. तम हेकान दो किस्म रेटिकुलेट तो पैरेलल ते. Green leaves make their food. Leaves give out water vapor through the process of transpiration. दपा यम हसा leaves water karan loss in the form of vapor. तथ अमलिश वन transpiration. Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. दपा ग्रीन लीव्स हसा पन गजा बनावा फोटोसिंथेसिस के जरिए तो विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो बे
water तो बे sunlight हंद मौजूदगी मज. Roots absorb water and minerals from the soil and anchor the plants firmly in the soil. दबा rootन हंस काम हसा च water तो minerals करा absorb soil मज बे soilस रटा मजबूती सान. Roots are mainly of two types, tap root or fibrous roots. Roots च आसान दोई किस्मिक, tap root तो बे fibrous roots. Plants having leaves with reticulate venation have taproot, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. Daban timan plantan yaman asan ch reticulate venation. Yaman leaven asan ch with reticulate venation. Timan ch asan taproot. Yaman leaves an asan ch parallel venation. Timan ch asan fibrous root. Timan plantan yaman hansan leaven ye parallel venation ch asan. The stem conducts water from roots to the leaves and food from leaves to other parts of the plant. Stem has kaam ch asan water nema leaves and ताई भी बाकियन पार्टन प्लांट केम तो और च आना यमन ट्यूबस जरिए यमन लकट लकट ट्यूब्स च आसान गजा leaves मज बाकियन plant पार्टन. The parts of a flower are sepals, petals, stamens and pistil. दबा flower एक चोर part हसे च आसान sepals, petals, stamens ते pistil. ये पूरा ऐसे यार chapter रस्म इत्त से मगले सोनी chapter.